So, as we know, taxonomy is actually it is a very complicated chapter, as it contains so much of fundamental things. Student needs to know different type of things in taxonomy. They have to memorize a lot. Okay, so let's prepare some MCQs regarding taxonomy, which can help you in your upcoming SSB preparation, SSB lectureship preparation. So, the first one, the system of a plant classification proposed by Linnaeus was artificial because of dash. The answer is C, because it took into account physiological and morphological facts. It has no relationship with evolutionary trends. That's why it is artificial. Then, epipetalous stamens with free filaments but fused anthers are found in dash. The answer is Asteraceae. Neck canal cells are absent in the archegonium of dash. The answer is Cycas. Next, presence of mucilage is the characteristic feature of dash. The answer is Malvaceae. Which is the correct floral formula for family Papilionaceae? And the option is A. Next, for solving this type of problem, you need to remember the floral formula of different families. Okay. Next, Apocarpus ovary and spirally arranged stamens are found in dash. देखिए, जो अपोकार्पस ओवरी होता है और जो स्पाइरली अरेंज्ड स्टामेन होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रानिनकुलासी में. सो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑप्शन सी होगा. तो इसके साथ सोलानासी को भी आप जोड़ सकते हो. देन, which of the following belongs to family Solanaceae and is rich in vitamin C? देखिए, इसका आंसर टमाटो है. ओके, मोस्टली विटामिन सी जिस वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स में होता है वहाँ पर साइट्रिक एसिड के मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है. तो टमाटो एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है. देखिए, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर मीन्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज डैश. Every organism is actually having two scientific names consisting of a generic and a specific epithet. So the answer is option C. Next, compared to other seed plants, Cycas has a markedly larger dash ovule. Next, syngamy means dash. We know syngamy means true fertilization. So the answer would be fusion of gametes. Next, which of the following families belong to inferi under Gamopetalae in Bentham and Hooker's system of classification? The answer is Asteraceae. ओके, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन इसका आंसर Asteraceae है. नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज डैश. द आंसर इज आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट, phylogenetic system of classification was given by dash. The answer is Engler-Prantl and Hutchinson. Then, emasculation means dash. The answer is removal of anthers. Next, who is known as the father of taxonomy? The answer is Carolus Linnaeus. Next, the basic taxonomic unit upon which the system of classification are constructed is dash. The answer is species. That is also the smallest taxonomical unit we are using. Next, tapioca plant which stores food in a large fleshy storage roots belong to the genus dash. The answer is Manihut. Okay. Next, you can check the scientific name of a tapioca plant. Next, monkey puzzle is a common name for dash. The answer is Orcaria imbricate. Okay, यहाँ पर एम्ब्रिकेट लिखा हुआ है लेकिन इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑर्कारिया औरौकारा. ओके, ये असल में मॉन्की पजल का जो परफेक्ट प्लांट है वही है. लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑर्कारिया भी मेंशन किया गया है जिनस नेम, तो आप एम्ब्रिकेट को भी ले सकते हो. साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका एल एंड हियर एल रिप्रेजेंट्स डैश. Here actually L represents botanist Linnaeus who gave the name to it. Okay. देखिए यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी जो नॉइज़ आ रही होगी तो उस नॉइज़ को आप इग्नोर कीजिए क्योंकि वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन की काम चल रहा है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो. ठीक है.
Food is stored in underground part of plants in members of family dash. The answer is Solanaceae, Brassicaceae and Liliaceae. देखिए कई कई बार ब्रासिकासी के जगह पर आपको क्रूसीफरी भी दिया सकता है, तो आप उसको भी मान के चल सकते हो क्योंकि क्रूसीफरी जो है ब्रासिकासी भी वही है. द टर्म न्यू सिस्टमेटिक्स वाज गिवन बाय डैश. द आंसर इज जुलियन हॉक्सली, सी. नेक्स्ट, what is common in Cyathium and Hypanthodium inflorescence? The answer is unisexual flowers. Next, in the system of classification by Bentham and Hooker, dicotyledonous plants have been classified as dash. The answer is polypetally, then gamopetally, then monoclamidae. Which taxonomic term may be substituted for any other? The answer is taxon. Okay, taxon is actually the common unit we are using for classification. So we can substitute it with species, genus, class, family, order, etc. Next, potato belongs to family dash. The answer is Solanaceae. Next, in ovary one ovule is present in dash. The answer is Asteraceae, option A. Next, fleshy fruits with persistent calyx are found in dash. The answer is Solanaceae. आप एग्जाम्पल में ले सकते हो टोमेटो को, तो वहाँ पर आप कैलिक्स को देख सकते हो. द फ्लोरल कैरेक्टर्स सिमिलर टू मालभासी एंड लिलियासी आर डैश. द आंसर इज सुपीरियर सिनकार्पस ओवरी with axial placentation, that is option A. Next, characters from flowers are used as a basis for classification because the answer is option C. Okay, that is reproductive parts are more conservative than vegetative parts. Next, the floral formula of Solanaceae is dash. The answer is D. आप यहाँ पर इब्रैक्टिएट को भी ऐड कर सकते हो. ठीक है. सिनगेमी वाज डिस्कवर्ड बाय डैश. द आंसर इज बी, दैट इज नोवास्कैन. नेक्स्ट, एंटेमोफिली इज पॉलिनेशन बाय डैश. द आंसर इज इंसेक्ट. ओके, यहाँ पर आप एयर को ले सकते हो एनिमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली, एनिमल जूफिली. द फ्लावर्स इन सोलानेसी आर डैश. दे आर एक्टिनोमॉर्फिक, देन दे आर बाइसेक्सुअल and they are hypogynous. Next, National Botanical Garden is situated at dash. The answer is C, that is लखनऊ. देखिए जो कलकत्ता में है वो असल में इंडियन बॉटनिकल गार्डन है और उसका नाम अभी चेंज करके हो गया है सार जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन. लेकिन जो लखनऊ में है वो असल में नेशनल बॉटनिकल गार्डन वहाँ पर है. द मेज ग्रेन इज ए डैश. द आंसर इज फ्रूट. Next, Synandrous condition is found in the family dash. The answer is Cucurbitaceae. Then, odd sepal on the anterior side is a characteristic feature of dash. The answer is Fabaceae. Okay, Fabaceae जिसमें आप Leguminaceae plants को भी देख सकते हो. A monocot flower can be differentiated from a dicot flower as dash. The monocots have a perianth. Okay. Eucalyptus belong to the family dash. The answer is Myrtaceae. Next, Atropa belladonna belongs to the family dash. The answer is B, that is Solanaceae. Most of the rubber plants belong to dash. The answer is Euphorbiaceae. Then, botanical name of a cauliflower is dash. The answer is Brassica oleracea और उसका आप वेराइटी ले सकते हो Botrytis. Okay. Next, plants which yield oil belong to the family dash. The answer is Brassicaceae. आप मस्टर्ड को वहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकते हो. All pulses belong to the family dash. The answer is Fabaceae. Okay. Members of which family of plants are dicots? The answer is Cactaceae. Next, 9+1 condition of the androecium is found in dash. The answer is Papilionaceae. Next, perianth is reduced to 2-3 membranous lodicules in the family dash. The answer is Poaceae. Next,
The largest family among dicot is dash. The answer is Asteraceae. You can find so many type of Asteraceae flowers like marigold, okay, sunflower. You can find head or capitulum type of inflorescence. Okay, there are so many varieties. Division of a dicot into herbaceous and arboreal series is seen in classification of a dash. The answer is Hutchinson. Next. One of the following belonging to family Liliaceae is a leaf tip climber, that is Gloriosa superba. Okay, it's the state flower of Tamil Nadu. It is also called flame lily. Okay, so it is one of the plant that belong to the family Liliaceae. Which of the following is the correct sequence of a taxa? The answer is division, class, order, family. The answer is option A. Next. The smallest unit of classification is dash. The answer is species. That is option D. I have mentioned it earlier. Next. The order generally have the uniform endings, that is ales. Okay. If it is family, then it is Aceae. Okay. If it is class, then it is EAE. Okay. Most of the biological names have been derived from dash. The answer is D, that is Latin. Then Lycopersicum esculentum belongs to dash family. The answer is Solanaceae. Next. The placentation in Composita is dash. The answer is basal. Next. Parietal placentation is seen in dash. The answer is Crucifery or Brassicaceae. Next. Floral formula failed to indicate dash. The answer is position of ovary on thalamus. Basal placentation is found in dash. The answer is Composita. Next. Composita जो है Asteraceae भी वही है. Timber is obtained from the member of dash. The answer is actually not mentioned here. Okay, the answer is actually Dipterocarpaceae. Okay, Dipterocarpaceae, वहाँ से आप टिम्बर को ऑब्टेन कर सकते हो. तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है. तो यहाँ पर मैंने टैक्सोनॉमी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और आपको टैक्सोनॉमी के बारे में और भी जानने के लिए आपको ओपी शर्मा, बी आर वशिष्ठ, इस तरह के बुक्स को भी फॉलो करना चाहिए जो कि एस चांद पब्लिकेशन या फिर टाटा मैग्रे-हिल पब्लिकेशन से है. तो वो बुक्स आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है टैक्सोनॉमी को डिटेल से पढ़ने के लिए. और देखिए यहाँ पर आज वीडियो में बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइजेस आया होगा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. ओके, तो उसको इग्नोर करते हुए आप सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए. और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे दीजिए. थैंक यू वेरी मच.